Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to our e-learning classroom of Gokuldham School, Nar. I am Nilesh Waghela, your Sanskrit teacher. Today we are going to learn the 7th chapter of Standard 10 Sanskrit. The name of the chapter is Subhashit Kusumani, means flowers of good sayings. Now I am going to read the introduction before the chapter. So please pay attention on the screen. Sushtu bhashitam subhashitam. That which is said well is subhasit, means epigram. Inexhaustible treasure of epigrams is found in Sanskrit literature, means संस्कृत लिटरेचर में सुभाषितों का खजाना है. The literate believe that पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम subhashitam. There are three gems on the earth: water, food, and wise sayings, means good sayings. As water and food are inevitable for mankind, so is epigram also inevitable. Inevitable means necessary. Sanskrit epigrams introduce not only Indian culture or people, but they also introduce human culture. Hence, they guide every human life beyond the place and time. That means संस्कृत सुभाषित में जो भी सीख हमें मिलती है वह कोई व्यक्ति या जगह से अधीन नहीं होती है, वह कहीं भी लागू हो सकती है. It is an undertaking to establish values in human life, like a friend. These epigrams help in character building of a person. These epigrams also supply beautiful illustrations of the fact that how can a man experience happiness and joy by following or practicing things which are worthy to be grasped in life. It is a special feature of epigrams to convey oceans of wisdom in a small vessels. Means जो सुभाषित होता है वह बहुत छोटा होता है, लेकिन इस छोटे से सुभाषित में कई सारा ज्ञान हमें वह प्रदान करता है. 7 epigrams are presented here which beautifully describe the value of good people's words, usefulness of trees, acquisition of virtues with efforts, loss caused by unstable minded person, means of examining man, worth of following virtues of great persons, and nature of resolute persons are presented here, with a view to impart moral values, good qualities, and life skills in students who are citizens of tomorrow. The Subhasitas are presented here. Now we are going to learn the first Subhasit of the chapter. Sabdistu Lilia Proktam Shila Likhitam Aksharam Asabdihi Sapathenapi Jale Likhitam Aksharam. Now see the meanings of the word. Sabdihi means by good people. Lilia means casually or playfully. Proktam means said. Shila Likhitam means inscribed on the rock or stone. Asabdihi means by wicked people, by bad people. Shapathen means after taking oath. Now see the translation of the Subhashit. Sabdihi tu Lilaya Proktam Shila Likhitam Aksharam means as to something said by good people, even casually, means lightly, it is like a letter inscribed on the rock. means अगर कोई सज्जन पुरुष ऐसे ही बात बात में कुछ कह देता है तो वह पत्थर पे लिखे शब्दों के प्रति होता है. एंड असब्दिहि शपथेन अपि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम means on the other hand something said by wicked people
even under oath or after taking oath is like a letter written on the surface of the water. और जो दुर्जन पुरुष होता है वह अगर प्रतिज्ञा लेकर भी कुछ कहता है तो वह पानी पे लिखे हुए अक्षरों के बराबर होता है. So here in this Subhashit, it is said that good people are true to their words. When they say something, that means it is happen. So they don't have to eat their words or go back on their words. Okay, their words are permanent like the inscription on the stone. But the wicked people are likely to change their own words in order to suit their convenience or selfish motives. So their words are like temporary words written on the surface of the water. Means सज्जन पुरुष जो है वह जो कहता है वह करता है, उसके शब्द वह निगल जाता नहीं है. और वहीं जो दुर्जन पुरुष होता है वह अपने स्वार्थ के कारण जो बोलता है वह करता नहीं है. सो हियर द ट्रांसलेशन इज, आई स्पीक वंस अगेन. As to something said by good people casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by wicked people after taking oath is like a letter written on the surface of the water. Now see the second Subhashit of the chapter. सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया कैन निवार्यते. See the meanings of the word फल छाया समन्वितः means having fruit and shade. महावृक्षः means a big tree. सेवितव्यः means should be served. दैवात् means by chance. Can nivaryate means who can prevent. Now see the translation of the Subhashit. फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः means a big tree having fruit and shade is worthy should be served. means हमें ऐसे बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, वहाँ पे हमें छांव और फल दोनों मिल सकते हैं. यदि दैवात् फलम न अस्ति छाया कैन निवार्यते. Even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its cool shade. means यदि कोई कारणवशात हमें फल प्राप्त नहीं होता है तो उसकी छाया कौन रोक सकता है. हमें छाया प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता. So here in this Subhashit it is said that when we take shelter under a big tree, one is at least sure of being able to enjoy its cool shade. And if it is the season for fruits, it will be an additional benefit. It is good to cultivate friendship with great and successful person, so we can benefit of its good nature and its goodness. Now see the third Subhashit of the chapter. आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधः तथात्मा गुणदोषयोः. See the meaning of the words mahata yatnen means with great effort. Shaile means on the mountain. Aropyate means is placed. Kshanen means in a moment. Adha means down. Nipatyate means pushed down. Tatha means similarly. Gunadoshayoho means virtue or vice. Now see the translation of the Subhashit. Yatha mahata yatnen shila shaile aropyate means a big stone is placed on the mountain with great effort. means हमें अगर कोई बड़ा सा पत्थर पर्वत पर ले जाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता
है। क्षणेन अधः निपात्यते मीन्स बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट। यदि हमें उसे नीचे फेंकना है तो उसके लिए एक क्षण ही काफ़ी है। तथा गुणदोषयोः आत्मा तथा गुणदोषयोः आत्मा that means similarly in case of man's soul going up and down due to virtue or vice, means if we have to place up big stones on the mountain, so we should make a great efforts, but it pushed down in a moment. Similarly, in case of man's soul going up and down due to virtue or vice, means cultivating virtues and building up good character require great effort and long time. The downfall take place in a moment. मीन्स हमें अगर हमारा कैरेक्टर बिल्ड करना है, हमारा चरित्र हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कई सारा परिश्रम और उसके लिए कई मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमें अगर बुरा बनना है और कुछ बुरा काम करना है तो उसके लिए एक मोमेंट यानी कि क्षण ही काफ़ी है। सो दिस सुभाषित और यह सुभाषित हमें कहता है कि हमें अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बुरा बनने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। नाउ वंस अगेन आई रीड द ट्रांसलेशन। आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयोः, मीन्स अ बिग स्टोन इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ ग्रेट एफर्ट बट it is pushed down in a moment. Similarly, in case of man's soul going up and down due to virtue or vice. See the fourth subhashit of the chapter. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रासादो अपि भयंकरः. See the meaning of the words. क्षणे means in this moment. Rushtah means displeased. Tushtah means pleased. Avyavasthit means deranged. Chitasya means mind. Prasadah means favor or company. Bhayankarah means terrible. Now see the translation of the Subhashit. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे. He is displeased in this moment and pleased in the next moment. Means कोई एक क्षण में बहुत खुश है तो कोई एक क्षण में बहुत नाराज हो जाता है. अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादः अपि भयंकरः भवति. Means even a favor from the one whose mind is deranged is terrible. Means अगर ऐसा व्यक्ति हमारी फेवर भी करता है, हमारे साथ भी होता है, तो भी ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति की कंपनी भी हमारे लिए बहुत भयानक साबित होती है. वंस अगेन आई रीड द ट्रांसलेशन. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे. मीन्स ही इज displeased in this moment and pleased in the next moment. अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादः अपि भयंकरः भवति. Means even a favor from the one whose mind is deranged is terrible. So here it is said that unpredictable persons is a problem for others. So it is very difficult to work with him. जो व्यक्ति जिसका मन अभी बहुत खुश है, जो व्यक्ति अभी खुश है और दूसरी क्षण में एकदम वह नाराज़ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की कंपनी यानी कि उसका साथ देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह कब खुश हो जाएगा कब नाराज़ हो जाएगा इसका हमें पता चल सकता नहीं है. तो उसका साथ, उसकी कंपनी भी हमारे लिए बहुत भयंकर और भयानक साबित हो सकती है.
Now see the fifth Subhashit of the chapter. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नेः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. See the meanings of the words. Yatha tatha means in the same way. Nigharshanam means by rubbing. Chedanam means by cutting. Tapaha means hitting. Tadanam means striking. Chaturbhihi means in 4 ways. Kanakam means gold. Parikshate means tested. Shruten means by education. Shilen means by character. Now see the translation of the Subhashit. Yatha चतुर्भिः निघर्षण छेदन ताप ताड़नेः कनकं परीक्षते तथा श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणः चतुर्भिः पुरुषः परीक्षतो. मीन्स यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़नेः चतुर्भिः कनकं परीक्षते. मीन्स as gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting and striking. In the same way तथा चतुर्भिः पुरुषः श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणः परीक्षते. Means in the same way man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. Means अगर हमें सोने की परख करनी है तो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं. बाय रबिंग मीन्स उसे घसकर, बाय कटिंग मीन्स उसे काट कर, बाय हीटिंग मीन्स उसे गरम कर कर, और बाय स्ट्राइकिंग मीन्स उस पर कुछ ठोक कर हम वह कर सकते हैं. सो इन द सेम वे मैन इज ऑल्सो टेस्टेड इन 4 वेज. मीन्स उसी तरह पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, उसका भी हम 4 तरीक़ों से उसका भी हम टेस्टिंग यानी कि उसका परीक्षण कर सकते हैं. बाय एजुकेशन यानी कि उसके ज्ञान से, बाय कैरेक्टर मीन्स उसके चारित्र्य से, बाय वर्च्यू मीन्स उसके गुण से, और बाय वर्क मीन्स उसके कार्य से. तो हम इन 4 तरीक़ों से जो व्यक्ति है उसका टेस्टिंग यानी कि उसका परीक्षण कर सकते हैं. वंस अगेन आई रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द सुभाषित. यथा चतुर्भिः कनिक्षं परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नेः. एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज: बाय रबिंग, कटिंग, हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग. तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणः. इन द सेम वे मैन इज ऑल्सो टेस्टेड इन 4 वेज: बाय एजुकेशन, character, virtue and work. See the 6th Subhashit of the chapter. आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णः च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञापरिपालनेषु विक्रांतकार्येषु भवाञ्जनेयः. Now see the meaning of the words. Apatsu means in calamities or in difficulties. Samareshu means in battles. Daneshu means in acts of charity. Nayeshu means in policies. Pratigya paripalaneshu means in fulfilling pledges. Vikrant karyeshu means in act of valor, means in acts of bravery. Anjaneyah means Hanuman, the son of Anjani. Bhava means be. Now see the translation. आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णः च नयेषु कृष्णः भव. Means be Ram in calamities, Bhim in battles, Karna in acts of charity, Krishna in policies,
भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु मीन्स बी भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस, विक्रांत कार्येषु आंजनेय भव मीन्स बी हनुमान इन acts of valor or acts of bravery. So in this Subhasit, the ideal persons of any act is presented here in this Subhasit. So when the younger is blessing by the elderly person or idle person, so one should set our ideal person in any act or any work. So here it is said that be Ram in calamities means हमें मुसीबत के समय में राम जैसा बनना चाहिए, कि भगवान राम के ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आई फिर भी वह अपने कार्य से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। बी भीम इन बैटल्स मीन्स युद्ध में हमें भीम के जैसा पराक्रम करना चाहिए। बी कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, और आप जानते हैं कि कर्ण एक महादानी कहलाता है, तो हमें दान किसके जैसा करना चाहिए? कर्ण के जैसा। कृष्ण इन पॉलिसीज मीन्स हमें कृष्ण के जैसी पॉलिसीज करनी चाहिए। बी भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस मीन्स हमें प्रतिज्ञा का पालन भीष्म की तरह करना चाहिए। बी हनुमान इन एक्ट्स ऑफ वैलर मीन्स हमें पराक्रम करना है तो हनुमान जी के जैसा करना चाहिए। सो हियर इन दिस सुभाषित द ideal being of every act is presented here. See the last subhasit of the chapter. प्रारभते न खलु विघ्न भयेन निचेः, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्यः, विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति. See the meaning of the words. Vighna bhayen means fear of obstacles. Nichehe means the lower persons, negative persons. The na prarabhyate means not made. Khalu means really. Vighna vihataha means struck down by difficulties. Madhyaha means the middle one. Viramanti means stop. पुनः पुनरपि means again and again. Vignehe pratihanyamanaha means being struck down. Now see the translation of the Subhashit. Vigna bhayen nichehe khalu na prarabhyate means the beginning of any work is not made or is not done by the lower persons owing to fear of obstacles means मुसीबत आने वाली है ऐसा सोचकर कि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, ऐसा सोचकर जो नेगेटिव लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, वह अपना कार्य आरंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहताः मध्याः विरमन्ति मीन्स द मिडल वन स्टॉप आफ्टर स्टार्टिंग व्हेन दे आर स्ट्रक डाउन बाय डिफिकल्टीज, और जो मध्यम जाति के लोग होते हैं, मध्यम लोग होते हैं, वह अपना कार्य शुरू तो कर देते हैं लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो उसे वह वहीं रोक देते हैं। विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना च उत्तम जनाः प्रारभ्यः न परित्यजन्ति मीन्स once having started, the best kind of persons do not give up even though they are beset with difficulties again and again. और जो उत्तम जन होते हैं, जो हकारात्मक लोग होते हैं, वह एक बार उन्होंने कोई कार्य शुरू कर दिया तो उसमें चाहे जितनी भी मुसीबत आए वह उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं और उस कार्य को वह पूरा करते हैं। सो हियर इन दिस सुभाषित 3 kinds of persons are introduced. Lowest are filled with negative thoughts, so they do not start a work because they are afraid of the difficulties. Means जो नीचे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वह मुसीबत के बारे में सोचकर ही अपना कार्य आरंभ नहीं करते हैं। The
mediators means the middle persons are enthusiastic in starting an activity, but when they encounter the problems, their initial enthusiasm disappears. मीन्स जो मिडल लोग होते हैं, मध्यम लोग होते हैं, वह पहले बहुत प्रोत्साहित होकर कोई कार्य आरंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है वह वहीं पर रुक जाते हैं. एंड द बेस्ट पर्सन्स आर नेवर गिव अप इन टू एनी वर्क और एनी एडवर्सिटी. मीन्स जो उत्तम लोग होते हैं वह कोई भी मुसीबत आ जाए वह अपना कार्य नहीं रोकते हैं, वह अपने कार्य में आगे ही बढ़ते हैं. सो हियर इन दिस सुभाषित इट इज सेज दैट इन द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्क इज नॉट मेड बाय द लोअर पर्सन्स owing to fears of obstacles. The middle one stops after starting when they are struck down by difficulties. And once having started, the best kind of persons do not give up even though they are beset with difficulties again and again. So these are 7 subhasit of these chapters. So we can learn many moral values from this subhasit. Now you have to write the translation and the exercise after the chapter in your notebook. Thank you. Jai Swaminarayan.